हेलो गाइस, वेलकम टू aimathzone। और फिर से मैं हाजिर हूँ डिटर्मिनेंट के साथ। सो इन द लास्ट वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द properties of determinants and exercise 4.2 I think, and few many questions were solved. And today I am going to discuss about the area of a triangle. In the previous class you have already learned how to find the area of a triangle if the all three vertices are given of a triangle. And in this chapter we will learn how to find the area of a triangle when the vertices of the triangle are given, and of course we will find it using determinant, right? So suppose ABC is a triangle and the vertices are x1 y1 x2 y2 x3 y3, right? Now we have to find the area of the given triangle. That means this part, right? Okay, the shaded part. So in the previous class you have already learned that the area of the triangle is half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2, this one, right? So this was the formula, right? And you can find it, or you can construct this formula by just use the simple coordinate geometry from here, and you can find that, right? And in this chapter we will learn using determinant, and this is the very easy process, right? Now I'll say that we can write this expression in determinant form, right? If we can write this expression in determinant form, then we're done. Then we can find the area of a triangle, right? Okay, so हम वही करेंगे कि इसको सिर्फ हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, और इसका इक्विवेलेंट डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा वही हम लोगों का आज का सिलेबस है, राइट? तो चलो देखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लिखें हाफ इंटू x1 y1 x2 y2 x3 y3 and 1 1 1, this one. So this equals to, चलो अब ब्रेक करते हैं, क्या मिलता है देखते हैं, राइट? ये था प्रीवियस क्लास का एक्सप्रेशन और ये है क्लास 12 का एक्सप्रेशन। तो चलो इसको देखते हैं क्या होता है। सो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू, सो you know what is the process to break this one or to express this one, to split this one. So half into x1 into, so this and this cancel, so y2 into 1 y2 minus y3 y3, this one. Next this one, this is the second row and first column, so minus 1 to the power 3, that means minus, so negative x2 into, so this one and this one, so remaining is y1 minus y3, so y1 minus y3. Next is this one, so plus x3, so this will be y1 minus y2, y1 minus y2, this one. So this equals to half into x1 y2 minus y3, this one. Take minus 1 as common factor, right? So this will be plus x2 into y3 minus y1 plus
x3 into y1 minus y2. This one, hence done. So this is this expression and this one are exactly same. So that's why you can write the triangle of the area of the triangle ABC is equals to half into x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, right? And calculate this determinant value, you will get the required area of the triangle, right? चलो इसके बारे में 2-3 बात बोल लेते हैं. अब मान लो कि यहाँ पर जो ऑलरेडी बी पॉइंट था, राइट? अच्छा, इसको रहने दो, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ कि मान लो कि ए एक ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, राइट? नाउ if we drop this point B on this line, suppose we have dropped it on the line C and this is B dash, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया. तब जाके देखो, अगर इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर दे या फिर कन्वर्ज कर दे इस लाइन पर, इस लाइन के ऊपर अगर चले आए ये पॉइंट, तो क्या वो ट्रायंगल बन सकता है? नहीं. उस कंडीशन में ए बी सी ए हो जाएगा कोलिनियर. दैट मीन्स 3 points are on the same line. जब ऐसा होता है तब ऐसा पॉइंट को हम लोग कोलिनियर बोलते हैं, राइट? सो at that situation ABC will be collinear. And when it will be? When it is not a triangle. When this is not a triangle, right? So from that point of view, we can say that this determinant value, this determinant is actually the area of the triangle, right? Then the area will be exactly 0. Why? Because the height is 0, right? So for this reason, if you can find the area of a triangle is 0, then you can say that the given 3 points are collinear, right? So if you are asked to verify whether the given 3 points are collinear or not, then you have to find the area of the triangle using determinant, and if you can find it as 0, then you can say that the given 3 points are collinear, right? So to test collinearity, you can use this one also, right? Okay, one more thing. मान लो कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके जो नंबर निकल के आया, डिटर्मिनेंट तो कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अब मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया, राइट? तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता है. इसीलिए जब भी तुम यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना. अगर यहाँ पर माइनस, मान लो कि यहाँ पर कैलकुलेट करके -6 आया, लेकिन नेगेटिव नंबर तो कभी एरिया नहीं हो सकता है, इसीलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है. सो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? 6. सो द एरिया विल बी एग्जैक्टली 6, राइट? ओके. अब मान लो कि एक एरिया तुमको दिया हुआ है और तुमको किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ रहा है. उस वक्त जब तुमको एरिया ऑलरेडी गिवन है और किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना पड़ता है, उस वक्त तुम उसका पॉजिटिव वैल्यू भी यूज करना और नेगेटिव वैल्यू भी यूज करना, राइट? क्योंकि वो जो एरिया दिया हुआ है, एरिया वैल्यू, वो तो एक्चुअली एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन वो एब्सोल्यूट वैल्यू का पहले वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था ये तो तुमको नहीं पता है. इसीलिए जब ऑलरेडी एरिया गिवन है तब उसको एक बार पॉजिटिव कंसीडर करना या और एक बार नेगेटिव कंसीडर करना. यही था आज का थ्योरी पार्ट. चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. सो चलो डायरेक्टली एक्सरसाइज में ही जाते हैं. सो एक्सरसाइज 4.3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टिसेस at the point given in each of the following, right? So question number 1 का जो 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 में क्या बोल रहा है? यहाँ पर 3 points are given, 1 0 6 0 and 4 3, this one, right? अब ये है 3 points है एक किसी ट्राइंगल का
3 vertices, right? And you have to find the area of the triangle, right? And you know that the area, the required area, therefore the required area is half into ये है x1, ये वाला है x2, ये वाला है x3. This is x1, this is x2, this is x3, and this is y1, this is y2, and this is y3, right? So you have to write the first column is x1, x2, x3. So this one is 1, 6, 4, this one, and 0, 0, 3. Next is 1, 1, 1, right? This one. So this equals to, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बोला था कि जब भी तुम डिटर्मिनेंट को ब्रेक करने जा रहे हो तब देख लेना कौन सा रो या फिर कौन सा कलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है. यहाँ पर देखो सेकेंड कलम में 2 0 है. So the calculation will be much more easy if we expand it with respect to the second column, right? So you can write here this equals to half into this is 0, this is 0, so with respect to 3, and this will be, this is the third row and second column, so this will be negative actually, so negative of 3, this one, and 1 minus 6, this one, so this equals to half into 3 into 6, 5, cause sorry, this will be 5, this will be 5, yeah, if I am not wrong, this will be 1 minus, yeah, exactly 5. So this equals to 15 by 2. Square unit. So this is the answer, right? So in the same manner you can solve the remaining questions. So I am going to the question number 2. So what does it say? Question number 2 says that so that the points A, B, C are collinear. So this is a very good question. Question number 2. Now in this question you have to show the given 3 points are collinear, and here the points are capital A, B plus C, and B, C plus A, and C, small c, A plus B. This is the small c, this is capital C, right? Okay. Now you have to show these points are collinear. So मैंने पहले ही बोला कि 3 points are collinear when the area of the triangle will be 0, right? So if so, then just calculate the determinant, right? So half into the area of the triangle ABC is half into, this is x1, so A, this is x2 and C, and this is y1, so B plus C, C plus A, and A plus B, 1, 1, 1, this one. So this equals to So this equals to, now see here, you can use the property that if any row or column is written in the form of each and every point as the sum of two elements, then you can break it, right? So यहाँ पर जो determinant है इसको तुम break कर सकते हो, या फिर रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन जो मैंने बोला था वो भी तुम यूज कर सकते हो. यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कलम 1 को C1 को चेंज कर देंगे
यहाँ पर जो ऑपरेशन आएगा वो है C1 goes to C1 plus C2 plus C3 plus C3। देखो अब मैजिक क्या होता है। अगर ऐसा है सो दिस विल बी हाफ इंटू, हम लोग चेंज किसको करते हैं, कलम 1 को, दिस वन। एंड कैसे चेंज करेंगे, C1 plus C2 plus C3, दैट मीन्स कलम 1 का जो एलिमेंट है 2 का 3 का सबको ऐड करेंगे। सो दिस विल बी A plus B plus C plus 1। सो A plus B plus C plus 1। सिमिलरली ए भी एलिमेंट सेम होगा, A plus B plus C plus 1। यहाँ पर भी वही होगा, A plus B plus C plus 1। कलम 2 एंड 3 अनचेंज रहेगा, तो उसको जो है B plus C, C plus A plus B और 1 1 1 दिस वन। सो दिस इक्वल्स टू, देखो डिटरमिनेंट जब मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर कोई भी रो या फिर कोई भी कलम से हम लोग कॉमन फैक्टर को निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो, एनी पर्टिकुलर रो और एनी पर्टिकुलर कलम। सो यहाँ पर जो कलम है फर्स्ट कलम, यहाँ से हम लोग A plus B plus C plus 1 को एज ए कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। सो दिस विल बी हाफ इंटू A plus B plus C plus 1 इंटू, अब यहाँ पर क्या रहेगा 1 1 1, B plus C, C plus A plus B और 1 1 1। अब देखो कलम 1 एंड कलम 3 आर आइडेंटिकल, और मैंने प्रॉपर्टीज में बोला था कि अगर दोनों रो या फिर दोनों कलम, कोई भी दोनों रो कोई भी कलम आइडेंटिकल है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, एग्जैक्टली। सो दिस इज 0। सो दिस इक्वल्स टू हाफ इंटू A plus B plus C plus 1 into 0 equals to 0। Hence the given 3 points are co-linear। okay, so चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does it say? The next question says that question number 3, find the value of K if area of the triangle is 4 square unit and vertices are। यहाँ पर अब दिया हुआ है ऑलरेडी कि उसका एरिया का वैल्यू कितना होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो वर्टिसेस है उस वर्टिसेस का सब ऑल द वैल्यूज आर नॉट गिवन। यहाँ पर हम लोगों का एक अननोन है, एक वेरिएबल है कि उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन 3.1, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं। सो द एरिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाफ इंटू K0 4 0 and 0 2, this one, and K0 4 0 and 0 2, okay, 1 1 1, this one। So this equals to प्लस माइनस 4 यूनिट, वहां पर जो यूनिट दिया हुआ है 4 यूनिट, उसको हम ऐसा लिख डालेंगे। अब जाके तुमको के का वैल्यू का सॉल्व करना पड़ेगा। सो जस्ट ब्रेक दिस वन। सो अगर हम इसको ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, हाफ को वहां पर मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर जो रहेगा वो है, हम लोग सेकंड कलम के जरिए इसको ब्रेक करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों 0 है। सो दिस विल बी थर्ड रो एंड सेकंड कलम, दैट मीन्स नेगेटिव। सो नेगेटिव ऑफ 2 इनटू, इसको रिमूव करो और बाकी क्या है k इंटू 1, सो k माइनस 4। सो दिस इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पर कितना है, माइनस 2k प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, राइट। सो अगर हम k का वैल्यू, सॉरी इसका वैल्यू अगर एक बार पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करें तो क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट
-2k प्लस 8 इक्वल्स टू, एक बार 8 मिलेगा, या फिर -2k प्लस 8 इक्वल्स टू -8, राइट। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट k इक्वल्स टू 0, या फिर यहाँ पर जो मिलेगा वो है -16, so k equals to 8. ओके, सो दीज आर द टू वैल्यूज। k का वैल्यू अगर 0 है तो भी उसका एरिया 4 निकलेगा, या फिर 8 होगा तो भी उसका वैल्यू 4 निकलेगा। इसी तरीके से तुम बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। ओके, और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है सभी इसी के ऊपर डिपेंड करके, या फिर तुमको कोलिनियर दिखाना पड़ेगा, या फिर तुमको एरिया निकालना पड़ेगा, या फिर तुमको ऐसा ही कोई के का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यू शुड ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, एंड हाउ टू फाइंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सो मेनी थिंग्स। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और अगर किसी को मेरा वीडियो चाहिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।